I'm just hoping it will last. Take this blunt to my face, I'm just hoping I don't crash. I'm too high, out of Hello space. guys, welcome back to the channel. In this particular video, हम देखने वाले questions that were asked by Accolite company. So the first question is, given a string, return if any anagram of a string is palindrome. Right? तो सबसे पहले बताता हूँ मैं anagram क्या होता है. Suppose हमारे पास एक string input है, suppose eat, and अगर हम इस eat से कोई दूसरा वर्ड बना सकते हैं, suppose t, तो all the characters in t are same as the character in word t. तो अगर दो वर्ड्स के अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर सेम है एंड उनको किसी जंबल तरीके से रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज एनाग्राम सिंपली. एंड इन टर्म्स ऑफ पैलेंड्रोम अगर बोले तो अगर किसी भी वर्ड को हम सपोज 101, अगर इसको हम आगे से पढ़े तो भी 101 है एंड इसको हम पीछे से पढ़े तो भी 101 ही है. तो दिस इज बेसिकली अ पैलेंड्रोम. कूल. नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, वी नीड टू रिटर्न इफ एनी एनाग्राम ऑफ अ स्ट्रिंग इज पैलेंड्रोम और नॉट. तो इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका क्या रहेगा, हाँ हमारे स्ट्रिंग के अंदर सभी कैरेक्टर्स का काउंट स्टोर कर लेंगे एक एरे के अंदर, राइट. एंड अगर किसी भी कैरेक्टर लाइक बेसिकली इफ देयर इज वन ऑड कैरेक्टर देन तो इट्स ओके, मतलब लेस देन और वन है तो चल जाएगा अपने पास. बट इफ देयर आर ऑड कैरेक्टर्स, द काउंट ऑफ ऑड कैरेक्टर्स इज मोर देन वन, दैट मीन्स दैट स्ट्रिंग इज not an anagram, right? And if it's not anagram, then it's not a palindrome as well. So let's try the question. सबसे पहले हम बनाते हैं एक array of size 26 and initially हम इसमें स्टोर करा लेते हैं 0. Cool. And I'll make a string s and I'll store this in this. Bachelor नाम से एक string है हमारे पास as a input. तो स्टोर कर लिया इसके अंदर and using a for loop will iterate in the string and हर स्ट्रिंग जो कैरेक्टर्स है उसकी ऑकरेंस में हमारे एरे ए के अंदर स्टोर कर लेंगे हम. ठीक है. तो इंट i इक्वल 0 सेमीकोलन i लेस देन s डॉट लेंथ सेमीकोलन i प्लस प्लस एंड e ऑफ s ऑफ ith कैरेक्टर है माइनस a प्लस प्लस. बहुत सिंपल है, राइट. एंड वंस दिस इज डन, अब हम क्या करना है, हमको हमारे एरे के अंदर ट्रेवर्स करना है एंड वी नीड टू चेक इफ द ऑड काउंट ऑफ एनी कैरेक्टर इज मोर देन वन, दैट मीन्स देयर इजंट एनी एनाग्राम which could be a palindrome as well. So again we'll traverse in this our array for int I equals 0 semicolon I less than 26 semicolon I plus plus. ऑल्सो एक हम बना लेते हैं एक वेरिएबल ऑड काउंट नाम से, जो कि हमारे ऑड काउंट करेगा, लेकिन हमारे एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स ऑड है उसको काउंट करेगा, राइट. इफ ए ऑफ ith इंडेक्स एंड 1, यू नो दैट्स एन एंड ऑपरेटर. सिंपली अगर ये अगर ट्रू होता है तो विल सिंपली इंक्रीज द वैल्यू ऑफ आवर ऑड काउंट बाय 1. एंड हम चेक करेंगे अगर ऑड काउंट इफ इट इज ग्रेटर देन 1 देन वी विल सिंपली रिटर्न 0. यहाँ से मतलब कोड फ्लो बाहर कर देंगे. यहाँ पे उससे पहले हम एक प्रिंट कर देते हैं स्टेटमेंट फॉल्स. कूल. एंड सपोज अगर ये कंडीशन ट्रिगर नहीं होती है, मतलब देयर इज अ स्ट्रिंग दैट इज एन एंड एनाग्राम एंड दैट एनाग्राम स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम एज वेल. So here we will simply print true, right, and return 0. That's a solution of this code. We'll try to run this. Okay. So as you can see the output is true. मतलब ये एक एनाग्राम स्ट्रिंग है जिसको हम पैलिंड्रोम बना सकते हैं. नाउ कमिंग फॉर द सेकंड आउटपुट, विल गो हियर एंड आई विल चेक विद दिस. So for this particular input, the output should be false, right? I'll clear it once. I'll again rerun it. Okay, there's some warnings. As you can see, the output is false, and hence our code is working absolutely fine.
This was the first question. Moving on to the second question, that is, we need to tell the correct position for the element to be inserted in a sorted array. Right? Sorted array. There should be a meaning कि हमको sorted array क्यों किया है. So for this we have basically two approaches. One with the brute force approach, जो कि हम simply array के अंदर from the 0th index से लेके n index तक ट्रेवर्स करेंगे, and we'll check कि क्या ये element, जब तक इसके element छोटे तब तक तो हमको next element तक jump करते जाना है. And as soon as we get the element greater than this value, then we need to return that location. This is the brute force approach. But अगर हमको चाहिए कुछ optimized approach, so for that we'll be using the binary search. So for that, let's make an array A of size, suppose this one, okay, 3 to 5. Of array of size 5 with elements 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4. And 6. Cool. And our value is int k. इसके अंदर हमको क्या ढूंढना है 5. Like हमको ये बताना है कि हम ये 5 इस array के कौन से index में push करें, right? So for that we'll be using a binary search algorithm for, yeah. And before using it, let's make a two variables. Int start equals to 0th index, and let's make end as n minus 1. Like n is the size of array, so size of array is 5, so we'll make it end as 4. Cool. And now we'll do while start is less than equals to end. तब तक हमारा while loop चलेगा. In this we'll calculate the mid element, that is equals to start plus n divided by 2. हम क्या चेक करेंगे, अगर तो मेरे array का mid element अगर यही वैल्यू मेरे k के बराबर हो जाती है, मतलब हमारी जो वैल्यू हमको पुश करनी है, that is this value, if this value is itself equals to the mid index value, so then we will simply return the mid value. So cout mid, and here हमसे कर देंगे return return 0. क्या, और मान लो ऐसा नहीं होता है, और अगर हमारी एरे ऑफ मिड इंडेक्स की वैल्यू, अगर ये वैल्यू छोटी होती है जिससे हमारे के से, तो हमको स्टार्ट को पुश करना आगे, बिकॉज इट इज ए सॉर्टेड एरे. तो इनिशियली हमारा स्टार्ट यहाँ पे है, एंड इसमें देखते, ठीक है, इसमें तो देयर आर 5 एलिमेंट्स, द मिड एलिमेंट वुड बी 2, तो 0 1 2 यहाँ पे. अभी मिड पॉइंट कर रहा है 3 को. अगर तो मेरे मिड की वैल्यू छोटी है किससे, 5 से, राइट, इट्स लेस देन 5, तो अब जो मेरे स्टार्ट इंडेक्स को हम ले आएंगे मिड प्लस 1 इंडेक्स पे, दैट इज यहाँ पे. तो स्टार्ट इज इक्वल्स टू मिड प्लस 1, राइट. और मान लो ऐसा नहीं होता है, तो हमारे एल्स कंडीशन के अंदर जो हमारा एंड इंडेक्स है इसको ले आएंगे मिड माइनस 1 के अंदर, राइट. ये हमारा लूप चलता रहेगा जब तक हमारी स्टार्ट और एंड इक्वल नहीं हो जाते. एंड वंस दिस इज डन वी विल सिंपली प्रिंट the end का next element, so end plus 1th index, and yeah, that's it. So now if we go for this, and इस particular input case के लिए the output should be 4. So here we go, रन कर रहे हैं. Yeah, so as you can see the output is 4. Cool. Let's clear it, and we'll test it for this particular second input, 1 3 5 6 1 3 5 6, एंड हमारे एरे की साइज हो गई है अभी 0 1 2 3, तो should be 3, right, because end is equals to array of size minus 1. तो array of size कितना है अभी 1 2 3 4, 4 minus 1 equals to 3. Perfect. And हमारी k की वैल्यू सेम ही है, right. So here we go. And for this particular input, the output should be 2. Cool. Let's run it. Okay, it's executing, and you can see the output is 2. So that was the two questions that was asked in Accolite company, and that's it for this video. मिलते हैं आपसे next video में. तब तक see you, have a good day, tata, bye bye, take care and sayonara.